Assalamu alaikum. I am Abdurrahim from Boys Higher Secondary School, Tartpura. Today I am going to deliver my lecture on the new topic, or I can say it is the important as far as the syllabus of 12th class is concerned, that is banking. And this banking we have to discuss particularly two banks, that is commercial bank and central bank. First, here we will discuss over this commercial bank. What are commercial banks? A commercial bank is that financial institution which accepts deposits from the people and gives loans for the purpose of consumption or investment. Besides commercial banks, these days perform various other functions such as credit creation, transfer of funds, agency jobs and जनरल सर्विस। ये तो आम लफ्ज़ों में हम जानते हैं कि जब हम बैंक पे जाते हैं अक्सर किसी से भी आप पूछोगे वो जाता क्यों है, सबसे पहले उसको किस लिए जाना होता है। या तो उसको लोन लेना है, पैसा निकालना है वहाँ से, उनसे लोन लेना है, या तो डिपॉजिट करना है अपना पैसा। ये हर एक बैंक का मेन जो फंक्शन होते हैं ये वही होते हैं। बियॉन्ड दोज फंक्शंस हियर दिस कमर्शियल बैंक, इसमें क्या है और अदर फंक्शंस, क्रेडिट क्रिएशन है, इसमें ट्रांसफर ऑफ फंड्स है, एजेंसी जॉब्स है एंड जनरल सर्विस है। अकॉर्डिंग टू द इंडियन बैंकिंग कंपनीज एक्ट, banking company is one which transacts of lending or investment of deposit of money from the public payable on demand or otherwise and withdrawable by check, draft, order or otherwise. Now, what are the main functions of them? Functions of commercial bank. These are two types: primary functions and secondary functions. Now this one, प्राइमरी फंक्शंस जो है इसमें क्या है, कमर्शियल बैंक जो परफॉर्म टू प्राइमरी एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स, इसका क्या क्या है। इसका पहला एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स, दूसरा है एडवांसिंग लोन्स, ये इसके प्राइमरी फंक्शन है। प्राइमरी फंक्शन क्या है कमर्शियल बैंक का? एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स, यानी जो कोई जिसके पास पैसा है, सरप्लस मनी जिसके पास है, खर्च के अलावा वो उस पैसे को बैंक में डिपॉजिट करता है, और बैंक का फंक्शन है वो एक्सेप्ट करता है, यानी वो डिपॉजिट कर रखता है उनका पैसा। दूसरा फंक्शन है जो नीडी पर्सनस हैं, जिनको ज़रूरत है किसी चीज़ के लिए भी, कारोबार के लिए, दूसरी चीज़ों के लिए, तो उनको एडवांस लोन करता है। ये इसके फंक्शंस है। अब पहला वाला क्या है, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स। A bank accepts deposits from the public. People can deposit their cash balance as checkable deposits or non-checkable deposits. Checkable deposits are those against which checks can be issued and therefore money can be withdrawn at any time.
Non-checkable deposits are those against which checks cannot be issued and therefore money can be withdrawn anytime. And instead, money in these deposits is kept as reserve with the bank for some fixed period of time. Accordingly, these deposits are also called fixed deposits. ये हम प्राइमरी डिपॉजिट का कर रहे हैं। दूसरा है इसका जो मैंने पढ़ा आपको, ये है एडवांसिंग लोन्स। Another primary function of the commercial bank is to advance loans. Banks advance loans mostly for productive purpose on approved security. The amount of loan is generally less than the value of the security. It is important to note the loan amount is never paid in cash. All loans are reflected as demand deposits with the banks. Since all deposits are not withdrawable at a time, banks keep as check reserves only a small percentage of the total demand deposits. Accordingly, loans are offered many times more than cash reserves of the banks. This is how banks create credit on or, or add to supply of money in the economy. Now, these were the this was the first type of these are the primary functions, and these two functions we are this are explained here. That is number one, accepting deposits. Number two, advancing loans. Hope you understand. Tomorrow I will try to make clear what are the functions of the secondary banks. Assalamu alaikum.